अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रूथ है और मैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर हूँ। आई एम वर्किंग रिसेंटली इन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल सिंस 15 years और माय जॉब एक्सपीरियंस इज़ इन इन्फेक्शन कंट्रोल। मैं पार्ट टाइम में WHO के साथ भी कोऑर्डिनेशन है मेरी। हम उनके साथ भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की को मॉनिटर करते हैं और एजुकेट करते हैं इन डिफरेंट सिटीज़। हमारा आज का मॉड्यूल नंबर 4 है IPC का और टॉपिक है हमारा एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक में हम देखेंगे क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन फॉर मेडिकल, सर्जिकल equipment and surgical instruments. The second point will be types of disinfectant and sterilization. The third point is reuse of single-use item. The fourth point will be decontamination of endoscopes and its accessories. And the last point will be handling of linen. सो ये सब पॉइंट्स जो हैं हमारे इनमें वी विल लर्न कि हम वो चीज़ें जो बिटवीन पेशेंट इस्तेमाल करनी है वो हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। एसेप्टिक टेक्निक क्या है, स्टरलाइजेशन और एसेप्टिक टेक्निक इन दोनों में फ़र्क क्या है, और फिर क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन में हम देखेंगे इनकी डेफिनेशंस। क्लीनिंग की क्या डेफिनेशन है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की क्या डेफिनेशन है, देन रिस्क असेसमेंट हम किस तरह से करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम इनको किस क्राइटेरिया में फॉल करें कि हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करें, डिसइंफेक्ट करें या हम इनको स्टरलाइज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ एसेप्टिक टेक्निक। सो एसेप्टिक टेक्निक जो है इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस that protect patient from healthcare associated infection and protect healthcare workers with the contact of blood, body fluid and body tissues. Aseptic technique जो है वो is an element of standard precautions. It protect patient during invasive procedures and used to prevent contamination with microorganisms. अगर हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो अकॉर्डिंग टू द जॉइंट कमीशन चीफ एसेप्टिक टेक्निक्स जो हैं वो क्या हैं। इनमें हमारा सबसे पहले आता है बैरियर प्रिकॉशन। बैरियर प्रिकॉशंस में वी शुड नो हाउ टू यूज़ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कहाँ हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव स्टरलाइज चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और कहाँ हमको अनस्टेराइल चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। पेशेंट केयर इक्विपमेंट और प्रिपरेशन, इसमें वी विल एलेबोरेट फॉर स्किन डिसइंफेक्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। एनवायरमेंटल कंट्रोल में जो पेशेंट प्लेसमेंट है, एनवायरमेंटल कंट्रोल में हमारे पास जो मरीज़ आते हैं जो एयरबॉर्न डिजीज़ के साथ हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ हैं, या वो मरीज़ जो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में हैं जिनको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो इनके साथ जो मरीज़ आते हैं उनको हम कहाँ अकोमोडेट करेंगे और किस पेशेंट के साथ हम उन्हें कोहॉर्टिंग उनकी कर सकते हैं। कोहॉर्टिंग मीन्स दो मरीज़ एक ही बीमारी के जब हम एक ही जगह पे उनको रिप्लेस करते हैं। Then the fourth point है इसमें कॉन्टैक्ट गाइडलाइन। सो ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर जो कॉन्टैक्ट गाइडलाइंस हैं वी हैव टू फॉलो। कोई भी एसेप्टिक टेक्निक करते हैं, लाइक हम बेड साइड फॉलिस कैथेटर इंसर्शन है, सेंट्रल लाइन इंसर्शन है, या हम कोई भी एसेप्टिक टेक्निक पेशेंट के बेड साइड पे करते हैं, सो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइंस हैं वी हैव टू फॉलो दैट। जो गाइडलाइंस, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसके हिसाब से हमें उसके लिए वर्किंग करना ज़रूरी है। सो उन गाइडलाइंस को, जो मैन्युफैक्चरल गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एसेप्टिक टेक्निक के बारे में हम जानें कि जॉइंट कमीशन की क्या रिक्वायरमेंट है और WHO की क्या रिक्वायरमेंट है। WHO इसके लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फोर्स करता है। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमारी प्रायोरिटीज़ हैंड हाइजीन। सो हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किन सिचुएशंस में हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है। PPEs का इस्तेमाल हम कब और कैसे करेंगे।
बिटवीन पेशेंट जो हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनकी क्लीनिंग डिसइंफेक्शन का क्या मैकेनिज़्म होगा। एनवायरमेंटल क्लीनिंग है तो उसको हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, लिनन हैंडलिंग है तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे, और फिर इसमें सेफ इंजेक्शन है सो उसके लिए भी ज़रूरी है दैट वी शुड नो स्किन डिसइंफेक्टेंट्स हम क्या इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। So difference between aseptic technique and sterilization. So aseptic technique और sterile technique दोनों में क्या फ़र्क है। इनमें जो एसेप्टिक टेक्निक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो एसेप्टिक टेक्निक जो है इनमें हमें जो प्रोसीजर वी आर गोइंग टू डू उसमें हमें उस प्रोसीजर को ड्यूरिंग प्रोसीजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस की कंटेमिनेशन से पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है। जबकि स्टेराइल टेक्निक जो है वो टोटली स्टेराइल एंड दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। सो उस इन दोनों में डिफरेंस है। सो एसेप्टिक टेक्निक और स्टेराइल टेक्निक को कभी भी हम नेवर थिंक दैट ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सो इनका डिफरेंस जानना हमारे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे जो इसमें वी विल सी जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड है इसमें आता है क्लीनिंग डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन फॉर रीयूजेबल आइटम्स बिटवीन पेशेंट। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत दफ़ा लोग कंफ्यूज होते हैं रीयूजेबल आइटम और सिंगल यूज़ आइटम। सिंगल यूज़ आइटम के लिए हम आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि सिंगल यूज़ आइटम्स क्या हैं और वो कब और कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम डिटेल में वी विल सी दिस वन, ये हैं रीयूजेबल आइटम। लाइक एम्बो बैग हम बिटवीन पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, सक्शन बॉटल्स हम इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन पेशेंट लिनन यूज़ होता है, बिटवीन पेशेंट बेड्स इस्तेमाल होते हैं, बेड साइड लॉकर्स हैं, और इस तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं जो बिटवीन पेशेंट यूज़ होती हैं। लाइक स्टीमर्स हैं, लाइक नेबुलाइजर्स हैं, आई मेड्स हैं, स्ट्रिंज पम्प्स हैं, ये हम एक पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको क्लीनिंग डिसइंफेक्ट करने के बाद हम दूसरे मरीज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लें और अल्कोहल स्वाब जो है उसी से अगर हम वाइप करें तो दैट विल बी इनफ फॉर टू यूज़ फॉर अनदर पेशेंट। इसके प्रिंसिपल गोल्स क्या हैं? द प्रिंसिपल गोल ऑफ क्लीनिंग डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डिवाइस। That probability of transmission of infection will be nil. The risk of transmission of infection depends on the type of device. इनकी क्लीनिंग डिसइंफेक्शन का मेन जो हमारा असूल है, या हम क्यों बिटवीन पेशेंट इन चीज़ों को क्लीन करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाए, लेकिन हम जो भी काम करते हैं द फर्स्ट मैकेनिज़्म विल बी क्लीनिंग। हम हैंड वॉश करते हैं तो पहले हम वॉश करेंगे, विल यूज़ सोप एंड वाटर। हम लिनन वॉश करते हैं तो विल यूज़ सोप एंड वाटर। उसके बाद डिसइंफेक्शन का मैकेनिज़्म है, और भी जो अदर डिवाइसेस हैं उनको भी पहले हम क्लीन करेंगे। और क्लीन क्यों हम करेंगे? ताकि उनमें जो ट्रांसमिशन, उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस डिवाइस के ऊपर, उनकी जो ट्रांसमिशन है वो दूसरे पेशेंट्स में जितनी हद तक हो सकता है हम उसको कम कर दें। और ये ट्रांसमिशन जो है ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन दूसरे मरीज़ों के लिए ना हो, क्योंकि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हम अपने मरीज़ों को हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से ही ट्रांसमिट करते हैं इन छोटी छोटी डिवाइसेस के ज़रिए। नाउ वी विल सी द डेफिनेशंस। Definition for cleaning, definition for disinfection, and definition for sterilization. So first we will see cleaning. Cleaning is an activity that removes against organic and inorganic material or dirt that is on the device surface, with the main purpose of removing condition that would enable the growth of microorganisms. So cleaning also allow the disinfectant to come into contact with the item to kill microorganism. This is a mechanical activity mainly done with soap or detergent to remove the dirt from the any device or from any material. After washing, object should be carefully rinsed in order to eliminate any residual chemical and then dry. So whenever we are going to use the equipments from after cleaning, so make sure that after cleaning we should rinse in the plain or clean or sterile water, or and then it should be dry, and then we can do
disinfection. अभी यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इनमें डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी क्लीनिंग इज़ मैंडेटरी. लाइक इक्विपमेंट्स हैं हमारे, लाइक हाउसकीपिंग ट्रॉली है, उसकी क्लीनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकेशन ट्रॉलीज हैं, दैट क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. इंस्ट्रूमेंट्स हैं आफ्टर यूज़, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट्स फॉल इन द क्रिटिकल आइटम्स, सो इनकी क्लीनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी जो टूथ फॉर्सिप्स हैं, उनके अंदर से जो ब्लड बॉडी फ्लूइड है, टिश्यू मटेरियल है, वी हैव टू रिमूव दैट वन. सो क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू द क्लीनिंग. क्लीनिंग में हमारी एनवायरनमेंट क्लीनिंग भी आती है, जिसको हम डैम्प डस्टिंग से डस्टिंग करके उन चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं. अदरवाइज पेशेंट रूम की जो चीज़ें हैं उनमें भी हम डैम्प डस्टिंग कर सकते हैं, ताकि हम वहाँ की जो डस्ट है या कोई भी अदर पार्टिकल्स है या ग्रीसी है या कोई ब्लड बॉडी फ्लूइड है, हम उसको रिमूव कर सकें और आने वाला पेशेंट प्रीवियस पेशेंट का कोई इन्फेक्शन कैरी ना करे. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन इज़ एन एक्टिविटी that consists of eliminating many of the pathogenic microorganisms that live on the device surfaces. It should be performed just after cleaning. Make sure that all other organic material has been removed. So during cleaning we should know that all the greasy or blood or body fluid or any other material available on the that devices, we should clean that vigorously, and it should be clean and dry. Then we can use, after that we can disinfect that the concerned device or suction bottle or humidifier or anything whatever we want to disinfect. This can be done with chemical, or that is high level disinfectant or low level disinfectant, depending on the nature and the type of equipment. The disinfectant approach should be selected based documented effectiveness with different microorganisms, including viruses, bacteria, fungi that might be contaminating the devices. So chemical use should have a manufacturer guideline, recommendations, and with its dilution, with its contact time, with its stability, preparation of the solution. So whenever we prepare solutions, any kind of solution, make sure that where you are diluting this solution, the environment should be open, or it must be ventilated. And then we should write down, after preparing solution, write down the date and time of preparation, date of stability, and the content, how much we dilute, what dilution, and how much is the dilution for that said disinfectant. So all these things we should make sure. So I will repeat for this one. We should make sure that the area is well ventilated. Whatever we are diluting, the date and time we should mention, date and time of contact, and stability time also we should mention on the diluting container. Wherever either we are using as a spray, either we are using with the damp dusting, or either we are using for cleaning or disinfection. So like this we have some different type of disinfectants, like operation rooms or in critical area. If we have any infected patient with MDROs or any other contagious disease, we can use UV lights also, and or we can use the chemicals also, depend on the patient condition and severity of disease or severity of infection, and the area of where we are going to take another patient. Either if transplant patients, then we have to thorough clean and disinfect the rooms also. Sterilization is the process. It eliminates all living microorganisms. So whenever we are doing disinfectant, so in disinfection the spores will remain, but sterilization is removing all the microorganisms. Even the spores will also finish or die from the surfaces. It should be performed just after cleaning and disinfection to make sure that the microorganisms or pathogens have been removed. Sterilization, the process that eliminates all living microorganisms and spores from surfaces.
It should be performed just after cleaning and disinfection to make sure that all pathogenic microorganisms have been removed. This can be done with mechanical. For example, we can do steam sterilization, or we can do autoclave, and ethyl oxide gas we can use, or hydrogen peroxide gas plasma sterilization. So the equipment which cannot be autoclave in steam sterilization or on high grade temperature cannot be autoclave or sterilized, so we can use the hydrogen peroxide gas plasma sterilization. So we will see risk assessment. रिस्क असेसमेंट हम किस तरह से करेंगे, कौन सी चीज़ें हम किस क्राइटेरिया में फॉल करती हैं, और किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इनको क्लीन करें और डिसइंफेक्ट करें, और आइदर ओनली ये क्लीन हो, हाई लेवल डिसइंफेक्शन इस्तेमाल करें, और स्टरलाइज हों, और ओनली वी विल यूज़ द क्लीनिंग मैकेनिज्म और स्टरलाइजेशन ओनली. सो रिस्क असेसमेंट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब the overall processes or method where you can identify hazards and risk factor that have the potential to cause harm. So risk assessment में we have a few steps. सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे हैज़र्ड्स इसमें क्या हैं. अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बिटवीन पेशेंट, तो उसका हैज़र्ड क्या है, हाउ मच इन्फेक्शन, उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या है, हम उसको कितना हाउ मच हम उसको इन्फेक्शन दैट पर्सन इज़ प्रोन टू कैरी इन्फेक्शन फॉर दैट. So we will identify the hazards, then decide who might be harmed and how. Maybe healthcare workers can also be harmed, patients can also be harmed, or visitors can also be harmed. So decide who might be harmed and how they will be harmed. So we will do risk assessment accordingly. Evaluate the risk and decide on the precautions. So whatever risk assessment will be there, we will identify the precautions, what precautions we will take, record finding and implement them, review your assessment and update if necessary. So one thing during disinfection, this is also very important. I forget to explain in disinfection. So make sure that the person who is diluting the disinfectant, the person, he must use पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सो जो भी रिक्वायर्ड PPEs हैं, हम जब भी डाइल्यूट करते हैं, कोई भी डिसइंफेक्टेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी डाइल्यूशन करते हैं, तो रिक्वायर्ड PPEs जो हैं उनका पहनना ज़रूरी है, और मैंडेटरी है दैट वी शुड यूज़ द ग्लव्स, फेस शील्ड एंड गाउन ऑल्सो, और वी कैन यूज़ एप्रन इवन. सो रिस्क असेसमेंट में हम इसका मैट्रिक्स किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे. इसमें हमारे आइटम्स जो हैं दैट विल बी द आइटम्स विल फॉल नॉन क्रिटिकल आइटम, सेमी क्रिटिकल आइटम एंड क्रिटिकल आइटम्स. सो इन रिस्क असेसमेंट वी विल सी विच आइटम विल फॉल इन सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल आइटम और नॉन क्रिटिकल आइटम. सो हर एक वो चीज़ जो हमारी इंटेक्ट स्किन को टच होती है, नॉन इन्फेक्टेड इंटेक्ट स्किन को टच होगी, दैट विल फॉल इन नॉन क्रिटिकल आइटम. हर एक वो चीज़ जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लाइक एंडोस्कोप्स हम इस्तेमाल करते हैं या और हम स्कोप्स इस्तेमाल करते हैं, सो दीज स्कोप्स विल फॉल इन द सेमी क्रिटिकल आइटम्स. और हर एक वो चीज़ जो हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती है या हमारे ब्लड स्ट्रीम में और स्टेराइल टिश्यूज़ में इन्वॉल्व होती हैं, या कांटेक्ट विद बोन्स हैं और एंटर इनटू contact the blood stream or enter in sterile tissue, so we have to autoclave or sterile those instruments and it fall in the critical item. So the non-critical item will be we can identify जो हमारी नॉन इंटेक्ट स्किन को, नॉन इन्फेक्टेड स्किन को टच होती हैं चीज़ें. सेमी क्रिटिकल जो हमारे रेस्पिरेटरी और एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, सिस्टोस्कोप्स हैं, इनके लिए दैट विल फॉल इन द सेमी क्रिटिकल. और क्रिटिकल आइटम्स वो हैं जो हमारी
बोन के कांटेक्ट में हो और कांटेक्ट विद द ब्लड स्ट्रीम एंड कांटेक्ट विद द स्टेराइल टिश्यूज़. सो ये सब चीज़ें जो हैं वी विल सी हाउ वी विल यूज़ दैम और डिसइंफेक्ट और क्लीन ऑल दिस थिंग्स. सो नॉन क्रिटिकल आइटम्स का क्लीनिंग मैकेनिज्म क्या है? We will use soap and detergent or water. We can use this one. So we should use the warm water for cleaning this kind of disinfectant, this kind of equipments. Like non-critical items, medical equipments हैं और उनकी surfaces should be clean with soap and water or detergent on regular basis and should be disinfect with intermediate level, intermediate or low level disinfectant when visibly soiled and items used with the isolated patients. So this is the cleaning mechanism for non-critical item. For semi-critical item, we will do these items required cleaning followed by disinfection using high level disinfectant according to the manufacturer instructions. और फिर critical items जो हैं it fall in the, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, like surgical instruments हैं that we will do the autoclave. और जो प्लास्टिक मटेरियल है जो हम हाई टेम्परेचर पे इनको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, सो उसके लिए ज़रूरी है कि वी कैन यूज़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस प्लाज्मा स्टरलाइजेशन. सो there are some pictures we can see. If you people will identify, how you will identify from this picture that which item will fall in critical or non-critical or semi-critical. Yeah, I think stethoscope and BP cuff will fall in the non-critical item, and the scopes, endoscopes or other scopes will fall in the semi-critical item, and instruments fall in the critical items. So first we have to do the classification, identify in which criteria the reusable item will fall. So when we understand in which situation this instrument we are going to reuse, so we will clean, disinfect and autoclave according to that situation. Either it fall in critical, either it fall in non-critical or semi-critical item. So here some views for the cleaning mechanism. Cleaning, disinfection and sterilization is very important. So we should understand that how we can, whatever the things we are using between patient, we have to clean according to the Spegler's classification. So we should not transfer microorganisms from one to another patient. There are some references. From these references you can more understand, if you read according to these references, if you read more, you will more understand that how important aseptic techniques are. So thank you very much.